Okay, see, basically how long do you do your visualization for? Since you're not practicing, how long do you do it? Do you do it for an hour, half an hour, how much? Ma'am, after half an hour, I try to do it as long as possible, but after half an hour, I just get distracted. I mean, the focus is not the same. Okay, see, visualization is extremely helpful, especially in our rehab, okay? And like Himanshi, since you've actually recovered from an injury, you can do it now also to, like build up the muscles and get back on the field as soon as possible, like in the best possible manner. So you can do visualization if you do it like twice a day. Once you try a visualization for healing, what part of your body is injured right now? Ankle. Okay. So what you can do is you can feel like, firstly you can just get yourself in a relaxed meditative state. Okay, feel your injury. Okay, see how much is the pain. If it's a 5, it's 6, it's 7, rate it. Okay, and then feel with your breathing, with your relaxation, that your ankle is getting healed, it is getting better, it is getting stronger. So that is the visualization part that we add up with auto suggestion. ऑटो सजेशन क्या हो रहा है? जो मैं एफर्मेशंस यूज कर रही हूँ अपने आप को, अपने किसी भी बॉडी पार्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए. ठीक है, सो इससे क्या होता है, आप अपने whatever you tell yourself while visualization, right? So you are sending messages to your neural pathways. So those neural pathways will send more nerve cells to your ankle that will heal it faster. So that is how you improve your recovery rate. Okay, so if it's supposed to take 10 days, if you do this, it might take you 6 or 5 days. So that's how effective auto suggestion with visualization is. So that is one way to do it for injury rehabilitation. Second part is, since you're not able to do it on field, do it as much as you can off field, like, because if you're not able to play, then try playing more and more with your mind's eye. Now the only intention is not that कि आप एक ही बारी में 1 घंटा करो, नहीं, break it down. If you're able to do it for 20 minutes, do 20 minutes के 2 sets. In one set you could like just see yourself like practicing, or whatever skills that are there that you want to improve, focus on those skills. How can I get it better? See yourself very closely and very slowly improving those skills. That is one aspect. And then the second time you do visualization, see yourself performing those skills in your matches. So there are a lot of ways that you can play around with your visualization, because what it is said, whatever you see in your mind's eye is what you can create in your reality also. So visualization has to be whatever I want to create tomorrow in my practice, I do it today in my mind. So that is how we train ourselves for visualization. Okay, anybody else? Ma'am, sometimes in visualization I find difficult to make it real. Means sometimes I don't think I am doing it reality. Realistically, how would you feel that? Like, what makes you feel that it's not realistic? Means that things I don't feel in real. Like that things I haven't done. Okay, so basically what you could do is, you could have a bullet points written for your visualization before doing it. Okay, and if you want to keep it more real, then you could just write down those bullet points, and in my visualization I will cover these points, and then you could do it. You could follow your script, whatever you write for bullet points, you could follow that while you do your visualization. Okay, that is how you can do it. That is how we also do it with our athletes. So the coaches, they give us a little scripting, some bullet points that we have to follow, and on the basis of that, that is how we formulate our visualization. Okay, so everybody, so today, do you have your candles? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Everyone, Sant, Adarsh. Okay, Adarsh has actually got his eye injured, so he's okay with not turning on in video. Everybody else, I want your videos to be on. Okay, yes, tell me. Sorry, ma'am, I didn't have that. You don't have your candle? Okay, it's okay. Everybody else, do you have it?
Yes. Okay, have you ever done a candle meditation before? Or a candle? I have done it. Huh? No, ma'am. I have done it. Okay. I have kisne bola hai? Acha, you've done it. Okay. Kabir, tell us, how did it help you? It helped increase my present moment focus. Basically, Right. present moment में कितना रहना उसमें help. ठीक है. And how did you do it? I tried to do it at night in a dark room and focusing on the flame of the candle. Okay. And how long? I tried first time till the for 7 minutes, and I tried 2-3 rounds of 5-6 minutes. Okay, all right. Okay. See, so basically why we do candle eye meditation, or what we call is Tratak in Sanskrit, right? So it is to improve, okay, like we all know, no matter what sports we play, concentration is vital, right? It's very important, है ना? Our attention cues is very important. अब अगर मैं batsman हूँ, ball आ रही है, मैंने इधर देख लिया, ball गई, I'm gone, right? You know, that's how it is. Football में same है. So no matter what sport we play, we have to be 100% centered in our game. Okay. So Tratak is something that helps us like in explosive manner with our focusing abilities. You know, focus ho gaya, concentration ho gaya, and then slowly, steadily, basically what happens, this is our prefrontal cortex of our brain. Okay. So जो ये Tratak करने से होता है ना, हमारे brain के regions जो develop होते हैं, वो हमारे emotion control में भी हमें help कर रहे हैं. ठीक है. So it has way like a lot, not just one particular, but a lot of benefits. It's just that we have to start doing it, and no matter what you do in your life, one rule to stick by it and to get result is repetition. I can give you the best techniques that world #1 athletes use, okay? But if you don't stick to it and do it every day, you know, you will not be able to get results. The guy who just got us a gold medal in Olympics, you know, he does not use a lot of fancy thing. He just uses these 2 to 3 things, and the only difference is Neeraj, he repeats it every day. That's it. He does visualization. He didn't even know that he's doing visualization, you know, because when we spoke about it, then you know, he was like, I don't know what imagery or visualization is, you know, but that is how it happens. But every night before sleeping, he would see himself playing at Olympics, winning our nation a gold every night for 3 years, you know. And like I say, last session जिन्होंने भी attend किया था, it was about the habits, right? Champions habit. आप में से किसी ने उस चीज को try किया? इसने try किया? Did anybody felt a difference in that? बताओ, बोलो. Yes, I'm waiting. हाँ जी प्रियांशु, आप ही बताओ. हाँ, yes. Yes, Siddhant. Motivation was really high while doing everything. Okay, so like we spoke about that 2 weeks back, right? Were you able to do it throughout these 14 days? Yeah, not really everything, but I was trying to stick to it as close as possible. Okay. See, now I'll just tell you one thing. Whatever we have, dekho, group study mein, because this was level 1, right? I just try to cover the basics of mind training in a very holistic manner. Even if whatever we've spoken about till date, if you try to stick to it every day, you will see a tremendous result. Okay. But again, you have to do it every day. Again, I will be quoting, you pick out any champion who's proved himself against all the odds. उनका जो हमने लास्ट सेशन में बात किया था, you know, they actually live their life from the end as in if I want to achieve an Olympic gold, so I will not be like कि मैंने जब वो goal achieve कर दूंगी तब मैं ये करूंगी वो करूंगी, नहीं. तो I will start living from a mindset कि मैंने आज वो goal achieve कर लिया है, अब मैं कैसे I'm living my life, how am I living my day, and that is how I live every day of my life until I win that medal, you know. And that is a very common distinction between any champion versus any other player out there.
When we talk about, athletes like Ravi Dhaiya, when we talk about athletes like PV Sindhu, athletes like Neeraj Chopra, they're not accessible. If Neeraj is, ab dekho, agar aap dekh rahe hoge, koi bhi newspaper aap kholo, har jagah it's Neeraj, right? So how has he created this wave? It is the lifestyle that he's been living through the past 3 years is equal to that of a champion. It's nothing new. Anybody who knows him closely can actually vouch for the fact that he was living like an Olympics gold medalist from the past 3 years. You can't call him, you cannot message him, there is no WhatsApp. What are you going to do? That is how an Olympic gold medalist becomes, So that is how we have to get ourselves into our peak performance mindset right now. And then you see, you will start, ignoring so many things. You will start saying no to so many things because you don't have time for everything. Okay, so that is something, that is the starting origination point of all our mind training. It is to get into the right routine and into the right mind frame. ठीक है, उसके अलावा अब जब हम त्राटक की बात करते हैं, त्राटक is something I would obviously want you guys to do it as much as you can, but as much as in not to overstrain yourself, but however कि आप दिन में उसको एक बार जरूर करें. ठीक है, before sleeping is always, it's always ideal. ठीक है, तो जो भी आपकी कैंडल है आप उसको अपने सामने रख लीजिए. ऑलवेज इट्स प्रेफरेबल अगर आपके को आई के लेवल पे है. ठीक है, जस्ट लाइट द कैंडल, कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, एवरीबडी. ओके, और कौन है? गोपाल, डू यू हैव योर कैंडल? सिद्धांत, डू यू हैव इट? Yes, ma'am. Okay, yeah. I'm actually in the hospital, so I won't be able to Why in switch the on the hospital? camera. So, ma'am, actually, my sister's operation. Oh, all right. Okay, no, not a problem. Okay, take care of her. Okay, so everybody else, do you have a candle? Okay, cool. So just light it. Yeah, light it and get yourself in a relaxed state. Once you do that, and again, this is one thing that I've found it to be extremely helpful for all our intrusive thoughts, because I think doing Trata can really help us to differentiate and learning. The most important thing is to learning how to control our mind, because a lot of time we know that intrusive thought are just because of habit. तो जब मेरे को पता है कि नहीं, this is not right for me, I know I can say no to these thoughts, and then can control my mind to not engage in them again and again. So that is how Trata can help us a lot. Okay, cool, lovely. So if you've started, देखिए, तो जो भी कर रहे हैं त्राटक, ठीक है, आप अपना फोन साइड में रख सकते हैं. You can just listen to me. And the only intention is आप flame को देखिए, ठीक है, and just look at the flame. Firstly, it's very important to close your eyes. Get yourself centered. I am here. I'm 100% aware. Focus on your breathing. And then when you open your eyes, just look at the candle flame. Look at the candle flame. Try not to blink your eyes. And just look at any one tip on the flame of the candle. And if you have any thoughts, don't fight them. Just let it be. Just immerse yourself 100% on the flame of the candle.
Without blinking, let's see what's the max that we can go. And whenever you're done, you can let me know. Yes. So today, the intention is not to overburn our eyes. It is just to get them friendly with the flame. That's it. Now you can blow the candles and get back to your screen. It's okay. Just close your eyes, whoever's done it, and you don't have to like just look at the screen instantly. Yes. So tell me, how long were you able to go at a stretch? Anybody kept a record? Maximum 1 minute. Okay, okay. See, I'll tell you the routine, the way that all of you will do Tratak is you keep a stopwatch, okay? Or if you have keep your phone, because then you will not have to look at me every night, right? So it's just that you can keep your phone, switch on your stopwatch, you have your candle, and then you look at the flame, you light the flame, okay? Do your centering exercise. That means get yourself whole focused in this moment, okay? And then when you start looking at the flame, try to stare at the flame at the maximum stretch without blinking your eyes, and when you feel that yes, this is done, I can't do it anymore, then just see how much time it has been and keep a record of that time. So every night before sleeping, try doing it 3 times. We're not going to overburn ourselves for the first week. So first week, just do it 3 times every night. So approximately when I have my athletes starting up, they start out with somewhere between 50 to 1 minute, 50 seconds to 1 minute. Okay. So that is something that you can easily go up to. And then what happens every day, you will see that your scores are improving by 4 seconds, 5 seconds, 6 seconds. That is how it happens. Okay. So this is how you do Tratak for about 3 days. Okay. And next, okay, so tell me, have you guys worked on your self affirmations, your auto suggestions? Everybody? Yes? Yes. Okay, so then after 3 days, when you do your Tratak, after doing your Tratak, you do your 3 rounds, okay? And after the 3rd round, you go for the 4th set, and that is where you say your affirmations while looking at the candle. That is how you use your affirmations.
your auto suggestions. Okay, because when you say that while looking at the flame, it gets even and even more credible. So we get better results when we do that, because the kind of, you know, like it is said in our in Hindu mythology that it opens the third eye. Okay, and when, if we say not like, you know, exactly 100%, but even if it opens your third eye by a 5%, and then when you use auto suggestion, that means it goes straight away to your brain. You know, your brain is way more likely to believe everything that you tell yourself in a, you know, in a semi hypnotic state. That is something that Tratak also helps you to get in. ठीक है, तो आप उस टाइम पे अपने ऑटो सजेशंस यूज करिए, आप अपने सेल्फ एफर्मेशंस यूज करिए. ओके, एंड whosoever does visualization before sleeping, then just go to bed, do visualization for 5 to 10 minutes and go off to sleep. इससे बेटर आपका स्लीपिंग रूटीन नहीं हो सकता है. So this is something that will be amazing for you, you know, like, so basically half an hour, this is all about 15-20 minutes, you know, like maximum half an hour. So I think every night before sleeping you can just give yourself half an hour. आप उससे पहले अपना जितना फोन चलाना है आप अपना फोन यूज करिए, ठीक है, whatever you want to do it. After that, just put your phone on a airplane mode. Okay, just have your stopwatch, do Tratak firstly, ठीक है, आप Tratak करें. उसके बाद secondly, what do you have to do? You have to do self affirmations with your Tratak, ठीक है, with your candle meditation. Thirdly, do your visualization on bed, and then while doing visualization, just go to sleep. That's it. This is a sleeping routine that is something which will be most beneficial for all of you. And you know, if few days that you're not able to do your Tratak, just do your self affirmations, okay, do your gratitude, and then just go to bed, okay, while doing visualization. Okay, another thing, how many of you do journaling? Okay, Yes. did we talk about journaling in our session? Yes, ma'am, we talked. We spoke about it. We spoke about reflecting journaling, right? Yeah, who's saying yes? Tell me. Anybody wants to learn how to do proper journaling? Okay, Yes, see, ma'am. let's just go to it. Okay, so basically, how many of you know about self-fulfilling prophecy? Have you ever heard this before? Okay, अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा कितनी बार होता है कि I don't want this to happen, I don't want this to happen, and that ends up happening? होता है ऐसे? You know, I don't want to get out. Oh God, I don't want to hit the ball there. I don't want to do this. Oh God, बस ये ना हो. You know, I don't want. We keep saying this, and then that actually ends up happening, right? होता है ना? So this is what we call self-fulfilling prophecy in sports psychology. Now, self-fulfilling prophecy क्या है? आपके brain I don't तो सुनता ही नहीं है. तो when you say I don't want this to happen, तो don't want नहीं हो रहा है, तो फिर क्या हो रहा है? I want this to happen हो जाएगा ना? So basically your mind does not ever, you know, like take no's and don'ts. It does not process no's and don'ts. तो we have to be very careful. अगर हम किसी भी चीज को अपने से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, and if we are very strongly, you know, acting in a very repulsive manner, तो basically what is happening, we are gonna attract it all the more. So this is what we call a self-fulfilling prophecy. तो जब भी हम एथलीट्स को सेल्फ टॉक करने के लिए, you know, when we train them to do self talk, तो सेल्फ टॉक हम कैसे ट्रेन करते हैं? हम ये नहीं करते कि आप मैच आ रहा है, like you know, when we deal with golfers या किसी भी स्पोर्ट की अगर हम किसी प्लेयर से बात करते हैं, तो वो हमेशा अपने आप को इंस्ट्रक्शन कैसे दे रहे होते हैं, ये नहीं करना, मेरे को बस ये नहीं करना, you know. तो rather अपने आप को अपने कैसे इंस्ट्रक्शन देनी है कि आपने क्या करना है. Talk to yourself from a way कि अगर मुझे ये नहीं करना, ठीक है, तो मुझे क्या करना है. Start saying that all the more, you know, कि for example, anybody of you want to give me an example जब आपने ऐसा कुछ किया, then I will try to correct it and rephrase it in a helpful manner. कोई बोलेगा? For example, when we are fielding or something, so we think कि मैंने बॉल छोड़ना नहीं है, कैच ड्रॉप नहीं करना, और सिचुएशन में जाता कैच ड्रॉप हो जाता है या मिसफील्ड हो जाता है. वेरी गुड, वंडरफुल. ठीक है, अब ये है, अब क्या होता है, जैसे अगर हम मान ले बॉल आ रही है, हम बोलेंगे नहीं, आई डोंट वांट ड्रॉप दिस, प्लीज, आई डोंट वांट ड्रॉप दिस, भगवान जी ये वो करके, यू नो, सब कुछ. अब
अगर इस टाइम पे आई डोंट वांट की जगह मैं एक सेल्फ अफर्मेशन यूज करूं, आई हैव गॉट दिस डूड, लाइक यू नो आई हैव ट्रेन, लाइक सी अब उस सेकंड में इतना इजी नहीं होगा, बट आई विल जस्ट गिव यू अ बैकग्राउंड ऑफ दैट थॉट. अगर मेरे को याद रहता है मैंने फील्डिंग प्रैक्टिस हर दिन ही तो करी है ना, और मैं इतने साल से फील्डिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ, so there is no way that I can actually drop the ball, you know, like I just have to be what, मेरे को अपनी बॉल को, अपनी आंखों को बिल्कुल बॉल पे फोकस करना है, ठीक है, मेरी पोजिशनिंग सही होनी चाहिए, मेरी हैंड की पोजिशनिंग सही होनी चाहिए, and I've got this. There is no way that I can actually lose this ball, right? तो उस समय मेरे को क्या करना है, मेरे को अपने आप को रीअश्योर करना है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज सही है, मेरा स्टांस सही है, मेरी टेक्निक सही है, you know, like just giving you an overview of it. And then instead of saying I don't want to lose this, I just have to say I've got this, yaar, I've trained so hard for this, I've got this, because मैंने पहले अपनी ट्रेनिंग में भी इतनी बार किया है, so this is nothing new. अब मैं आपको एक गोल्फ का एग्जांपल देती हूँ, because गोल्फ में अपने आप से बात करने का सबसे ज्यादा टाइम होता है, बिकॉज उस गेम के बीच में पैचेस बहुत होते हैं. तो वहां पे क्या होता है, जो भी गोल्फर्स होते हैं उनके ना, जैसे पानी का बहुत ना ऑब्स्टेकल्स होते हैं, तो उनके दिमाग में क्या चलता है, बस मुझे बॉल ना पानी में नहीं मारनी है, बस पानी में नहीं मारनी है, बंकर में नहीं मारना है, ठीक है. तो बेसिकली जब ऐसे वाले टाइम पे क्या होता है, वो बॉल पानी या बंकर में ही मारते हैं, तो उसकी जगह क्या है, अब देखो 100 में से जो पानी है वो 20% है, जो बंकर है 15% है, 35% हुआ. उनको बाकी जो ग्रीन एरिया है जो 65% है, वो अपनी सेल्फ टॉक उसके लिए यूज नहीं कर रहे हैं. तो रैदर उस टाइम पे उनको सिर्फ क्या करना है, यू नो व्हाट, देयर इज सो मच ग्रीन आउट देयर एंड आई एम जस्ट गोना हिट द बॉल देयर, दैट्स इट. दैट इज वेरी सिंपली इट. तो आपकी जो सेल्फ टॉक है वो ये नहीं होनी चाहिए कि आपने क्या नहीं करना है और क्या नहीं होना चाहिए, सिर्फ उस वे में फोकस होगी कि आप क्या चाहते हो, आउटकम कैसा हो, बस. स्टार्ट वाइब्रेटिंग ऑन दैट फ्रीक्वेंसी, what is it that you want to happen, okay, and then use your self affirmations on that. All right, is that clear with everyone? So that is one thing that I want all of you to integrate in your self talk, okay. And after that, I'm also like while taking a catch, what I normally do is that I say that the ball has a life in it. So okay. I use that mindset, and that actually helps me. You know that you don't want to lose the life, and then you want to save a life. So you take the catch no matter what happens. Oh, that's wonderful, Siddhan. Who told that to you? I think that's great. My dad. That's wonderful. I think that reminds me of this egg thing, you know, that you don't want to drop the egg, you got to save it. Okay, that's wonderful. I think all the cricketers can definitely use that one. And so yeah, you know, from that aspect, anything, any kind of, like, you know, when we do individual session, that is where we really tap into all the self talk ki athlete ke kya self talk chal rahe hain, kya hinder kar raha hai, usko hum kaise helpful kar sakte hain, theek hai. But in a very generalized manner, I would just say ki don't indulge into any self talk or instructional self talk that is coming with I don't want this to happen. नहीं, वो हमें हेल्प नहीं करेगा, वो हमें नीचे लेके आएगा. रादर हमें क्या करना है, आप क्या चाहते हो आउटकम हो, उससे रिगार्डिंग अपनी सेल्फ टॉक करो, ठीक है, which is always has to be from a very positive and a rational and a motivating point of view, ठीक है. अब देखिए, अब हम अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को ग्रैटिट्यूड के थ्रू कैसे बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है. अब आप में से कोई कभी किसी ने थैंक यू नोट्स लिखे हैं अपने आप को? How often do you write it? Every day, ma'am. Every day? No, Yes. what kind of thank you notes? I mean, जो भी पूरे डे में हुआ होता है मेरे साथ अच्छा, उसके रिगार्डिंग थैंक यू बोलना. Okay, see, that is what you call basically आप अपनी gratitude listing कर रहे हैं, ठीक है. But when we talk about thank you notes, it's a form of gratitude note, but ये थोड़ा different है. अब क्या होता है, आप I won't obviously tell you to do this every day, but if you can do it like every हर week में 2 या 3 बार, ठीक है, you can pick out any person, any object in your life, anything, okay, and just write a thank you note for them. And you know, if you want, you can just keep it to yourself, or if you want, you can extend it to them, ठीक है. So that is what I talk about thank you notes. ये क्या होता है हमारी लाइफ में ना, हम बहुत अक्सर complain and crib करते हैं. So when we write a thank you note, especially this is always way more advisable to do it on a day where you're not feeling very happy.
उस दिन अगर आप ये करोगे ना, it will clear your perspective on a lot of things. Okay, so thank you notes would be like, today I'm just writing a thank you note for my maid, that's it. And that note has to be about 10 lines. तो अगर आप इसको इनिशियली हर दिन करना चाहें, बट जो रिसर्च है वो ये बोलती है कि हर दिन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से बेटर है कि 3 दिन आप बहुत इंटेंसिवली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। हर दिन 1-1, 2-2 लाइन लिखने से बेटर है कि आप कोई भी 3 दिन पकड़ो, लेकिन उसमें आप 10 मिनट एक्चुअली में ग्रैटिट्यूड के साथ लगाओ। एंड ग्रैटिट्यूड में देखिए, अब क्योंकि ग्रैटिट्यूड थोड़े टाइम से बहुत चल रहा है, तो आई सी लॉट ऑफ एथलीट्स एंड पीपल डू ग्रैटिट्यूड लिस्टिंग, बट दे डोंट फील ऑल द इमोशंस। जब तक आप कोई भी एक्टिविटी को इमोशनलाइज नहीं करोगे, आपको उससे रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अगर हमें उससे रिजल्ट चाहिए, तो वी हैव टू जेन्युइनली फील ईच एंड एवरी वर्ड दैट वी आर राइटिंग आउट। ठीक है, तो पहली चीज है आपका थैंक यू नोट। यू कैन जस्ट स्टार्ट आउट विद, आपका कोई प्लेयर है आपके प्रैक्टिस सेशन में, आपके कोच है, आप अपने आप के लिए थैंक यू नोट लिख सकते हो। ठीक है, सो स्टार्टिंग में फॉर 2 weeks एवरी डे जस्ट टेक अ 5 minutes एक्टिविटी and just write down a thank you note to different people every day, just different people, keep them to yourself, but हर दिन 5 मिनट अलग लोगों के लिए, अलग किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए आप थैंक यू नोट लिखिए। दैट इज द फर्स्ट थिंग। ओके, सेकेंड क्या है, एंड इफ यू देन फील लाइक यू कैन शेयर इट विद देम, और यू ऑलवेज हैव अ चॉइस कि आप उसको अपने पास रखो। ठीक है, सेकेंड है ग्रैटिट्यूड जर्नल करना ट्वाइस अ वीक। अब ट्वाइस अ वीक क्या है, बिकॉज अगेन अगर आप उसको इक्वली इमोशंस के साथ और पर्सनल टच के साथ हर दिन कर सकते हो, परफेक्ट। बट जब लोग हर दिन करते हैं ना, वो सिर्फ एक हैबिट में करते हैं कि बस ये करना है तो मैं कर देती हूँ, उससे हमें बहुत रिजल्ट नहीं मिलता है। सो when I talk about writing a gratitude journal, you can just start out with writing 3 things that you're genuinely grateful for. But for that, I want you to feel it. अगर आज आप बोल रहे हैं कि आपके gratitude journal में आप लिख रहे हो कि I'm so thankful and blessed to have a mother, like her, like my mom is. But मैंने सिर्फ वो लिख दिया, but I'm not feeling. तो आप जो भी एक सेंटेंस लिख रहे हो, it has to be followed by about 2 to 3 minutes of literally thinking about your mother's activity, all her selfless sacrifices, all her selfless activities. And उससे क्या होगा, आपने 3 मिनट ये फील किया, फिर आप ये लिख रहे हो, तब आपने अपने अंदर एक्चुअली में ग्रैटिट्यूड को इंक्रीज किया है। सिर्फ लिखने से इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो हमें इमोशंस को यूज करना है, हमें डेप्थ को यूज करना है, और फिर क्या कर रहे हैं, मैं और ज्यादा उसमें पर्सनल टच ऐड कर रही हूँ। जब मैं ये सेंटेंस लिख रही हूँ, फिर उसके बाद मैं लिटरली सोचूं कि मेरी मॉम ने कब कब, शी इज एक्चुअली बीन द ट्रूएस्ट ब्लेसिंग फॉर मी। ठीक है, तो ये तरीका है हाउ टू डू ग्रैटिट्यूड, हाउ टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर। फिर है कॉन्शियस डिसीजन टू बी ग्रेटफुल बिफोर जर्नलिंग। अब क्या है, अब जब हम जर्नलिंग करेंगे, however I always suggest कि आप अपने दिन में कोई भी वो 10 to 15 मिनट्स का एक सेक्रेड टाइम रखिए, जहां पे आप बहुत कॉन्शियसली आप थैंकफुल हो, आप बहुत कॉन्शियसली you're just being grateful about the opportunity that you're working so hard on yourselves. अपने आप को क्रेडिट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, when we talk about practicing gratitude, because a lot of time what happens, हम सब लोगों को gratitude, हम सब लोगों को thankful हो रहे हैं, बट हम अपने आप के लिए नहीं हो रहे हैं। So that is what we talk about when we talk about conscious decision to be grateful before journaling. अपने आप की वो जो आपकी क्या वो चीजें हैं, like the fact that आप हर दिन gratitude practice कर रहे हो, that talks about कि आप कितने ज्यादा सिंसियर हो। तो आपको अपने आप को भी क्रेडिट देना है जर्नलिंग से पहले, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर अगेन क्या है, हमें डेप्थ पे काम करना है rather than breadth। हर दिन काम करें, या कि कई लोग क्या करते हैं 10 चीजें लिखते हैं जिसके लिए वो ग्रेटफुल है, बट वो उसको फील नहीं कर रहे हैं। सो रैदर आई वुड हैव यू जस्ट राइट 2 qualities that you genuinely grateful for than writing 10। तो हम डेप्थ पे फोकस करेंगे rather than क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। ठीक है, फिर है फोकस ऑन पीपल, जो हमने बात करी जब अपने थैंक यू नोट्स करते हैं, फोकस ऑन देम। देन है फोकस ऑन प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस। अब ये जो चीजें क्या है ना, ये आपका इमोशनल शिफ्ट कर रही हैं, ये आपका पर्सपेक्टिव चेंज करती है परमानेंटली। अब क्या होगा, कई लोग आपने देखा होगा वो हर चीज में ना बड़े नैगिंग अप्रोच लेते हैं, कि उनको हर चीजों में नुक्स दिख रहे हैं, उनको हर चीजों में ना बड़ा चिड़चिड़ापन हो रहा है, वो कभी भी किसी को बहुत ज्यादा थैंक यू नहीं बोलते हैं, लाइक डिफरेंस होता है ना। हम जो कहते हैं कि ये एथलीट एक बहुत अच्छा इंसान है, तो उस अच्छे इंसान की यही तो क्वालिटीज होती हैं, वो आपको कभी भी कंप्लेनिंग करते हुए नहीं दिखेंगे। ठीक है, वो कभी भी आपको दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज करते हुए नहीं दिखेंगे।
तो ये जो क्वालिटीज होती हैं ये हमें एक बहुत बेटर प्लेयर भी बनाती हैं। हाई प्रेशर सिचुएशन में यही जो सिमिलर ट्रेट्स हैं ये हमें हमारी इंटरपर्सनली भी हमें बहुत डेवलप करता है। तो आपको क्या करना है, कभी भी किसी ने आपके लिए बहुत रैंडम कोई गेस्चर किया, ठीक है, आप उनको कितने दिल से थैंक यू बोल रहे हो, बट मोर इम्पोर्टेंटली आप अपने अंदर कितने अच्छे से थैंक यू फील कर रहे हो कि यार वाओ दिस वाज सच एन अमेजिंग गेस्चर, यू नो, एंड देन यू रिक्रिएट दैट गेस्चर विद समबडी एल्स, यू गेट इट। तो अगर आपके साथ किसी ने अच्छा किया देन यू रिक्रिएट दैट, तो ये आपको एक बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी की फीलिंग देगा। ये बेसिकली जो सब है ये पॉजिटिव साइकोलॉजी का पार्ट है। एंड पिछले 4 सालों में देखा गया है स्पेशली यूनिवर्सिटी ऑफ ब्लॉफबर्ग एंड लीड्स ने, कि पॉजिटिव साइकोलॉजी अगर स्पोर्ट्स के साथ ऐड हो जाए तो वो बहुत ज्यादा एम्पलीफाई हो जाती है। एंड दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन, अगर आप सब टेनिस फॉलो करते हैं तो आपने अगर देखा होगा जो नोवाक जोकोविच है, तो वो अपनी जो टेनिस की सक्सेस का जो कंट्रीब्यूशन है वो कहते हैं कि मेरी जो मैक्सिमम अभी मैं टॉप पोजीशन में हूँ वो सिर्फ टेनिस खेलने की वजह से नहीं है, वो इस वजह से है क्योंकि मैं ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव साइकोलॉजी मेडिटेशन को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। सो दैट इज समथिंग, ये क्वालिटीज उस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें बेटर से अगर बेस्ट बनना है और बेस्ट बन के अपने आप को सस्टेन करना है उन चीजों के लिए। फिर क्या है, आपने जब भी आपने अपनी जर्नलिंग कर दी, एक्टिविटी आपने करी, आप उसको रीड करें और फिर उसको इमेजिन करें, लाइक जो भी आपने अपना जर्नलिंग किया, ओके, आफ्टर आपने अपना ग्रैटिट्यूड किया, थैंक यू नोट किया, या आज आपने अपने दिन को पर्सपेक्टिव एक बार दोबारा देखा, ठीक है, उसके बाद आप उसको सबको दोबारा रीड करो, एंड देन व्हेन यू रीड इट यू विल रियलाइज कि एक्चुअली में देयर इज सो मच टू बी थैंकफुल फॉर, and then you can imagine and recreate that from more and more of gratitude perspective. फिर है राइटिंग। अब राइटिंग जितना ज्यादा हम अपनी राइटिंग इंडल्ज करते हैं इन सब चीजों को, उतना ज्यादा